Good morning students. Today we are going to discuss very important derivation for 5 marks. The question was asked 3 times. What is the name of the derivation? Expression for electrical conductivity of the material in terms of number density and relaxation time. Very important derivation for 5 marks. The year of appearance are June 2015, June 2018, March 2020. Recent examination. Overall they asked for how many marks? 5 marks. जस्ट रिसेंट एग्जाम आपके सीनियर्स बैच को भी जो क्वेश्चन जो है पूछे सो है कितने मार्क्स के लिए? 5 marks के लिए. What is the name of the question? Obtain an expression for electrical conductivity of the material in terms of number, density and relaxation time. And you know electrical conductivity you are denoting with which symbol? Sigma. Okay, material terms of number density means number of free electrons per unit volume of the conductor. Number density symbol N, relaxation time ka symbol tau. Overall we are going to write expression for electrical conductivity of the material in terms of number density N and relaxation time tau. What is number density? Electron density. What is electron density? Number of free electrons per unit volume of the conductor. Number of free electrons per unit volume of the conductor we call number density or electron density, or the denoted by which symbol N. Okay, fine. We discuss all the things. This derivation is related to previous derivation. Okay, you must remember. So mathematically we are going to prove sigma electrical conductivity. Sigma is equal to Ne square tau by M. Prove that sigma is equal to Ne square tau divided by M. What is sigma? Electrical conductivity. What is N? Number of free electrons per unit volume or electron density. What is E? Charge of electron. What is the tau? Relaxation time. What is M? Mass of electron. So this is the formula. Here we are expressing electrical conductivity in terms of number density N or number of free electrons per unit volume, tau, relaxation time, what is E, charge of electron, what is M, mass of electron. This formula we are going to prove. अभी आने वाले डेरिवेशन में मैथमेटिकली हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं. कितने मार्क्स के लिए? 5 marks के लिए. 3 times the question was asked. Remember, this means you try to understand how much this question is important. How much this question is important you try to understand. 5 marks के लिए question बहुत important है. Okay, fine. Let us discuss with the same diagram. Let us discuss with the same diagram. What diagram we used while proving I is equal to NEAVD. I is equal to NEAVD. डेरिवेशन प्रूव करते टाइम जो डायग्राम हम इस्तेमाल करें वही डायग्राम यहाँ पे भी यूज होता है. फाइन. सेम डायग्राम. एंड यू नो देयर इज वन सिलिंड्रिकल वायर मेटालिक कंडक्टर which is connected with a battery to maintain a potential difference V. Fine. When we are successful in maintaining a potential difference V, electric field setup. Electric field setup. Okay, what is electric field? Capital E. Because of this electric field, electrons are accelerated opposite to that. Because of electric field setup inside a conductor or metallic wire, electrons are accelerated opposite to that with what velocity? Vd. The direction of electric field is this. The electrons are accelerated opposite to that with what velocity? Drift velocity Vd. What is L? Length of a conductor. What is I? Current flowing through the conductor. What is I? Current flowing through the conductor. What is A? Area of cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इतना कंडक्टर है उसका लेंथ क्या है? L है. इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये कंडक्टर को हम किससे कनेक्ट करें? बैटरी से कनेक्ट करें. Why we are? What is the necessity of connecting a battery? Because we want to maintain a potential difference across the ends. Why should we maintain potential difference? Because we want to set up electric field inside a conductor. Because of this electric field, electrons are accelerated opposite to that with what velocity? Drift velocity. ये है N, number of free electrons per unit volume, or what is its another name? Electron density. What is N? Number of free electrons per unit volume. Symbol is N. What is E? Electric field. What is Vd? Drift velocity. What is V? Vd is a drift velocity. What is V? Vd is a drift velocity. What is V? Potential difference between the ends of conductor. एक एंड है, एक एंड है, दोनों के बीच में Pd कितना है? V. Pd means potential difference between the ends of the conductor. What is the tau? Relaxation time. And you know the definition of relaxation time. The average time taken between two successive collisions of free electrons with fixed ions or atoms.
the average time taken between two successive collisions of free electrons with fixed ions or atoms. That is the symbol is a tau. Okay. Now what is m? Mass of electron, mass of free electron. How much? Tell me. 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg is the mass of electron. Kitna hai mass of electron? 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. How much is the charge of electron? Small e 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. These values you must remember. ये values constants है, standard values है. Problem में देने दो नहीं देने दो. You have to remember m value, e value. Fine. Now this is all about explanation. Let us go for electrical conductivity sigma. Okay, sigma is electrical conductivity. We are going to obtain mathematical derivation. Sigma is equal to n e square tau divided by m. Sigma is equal to n e square tau divided by m. What is n? Number of free electrons per unit volume or electron density. What is small e? Charge on electron. What is the tau? Relaxation time. What is m? Mass of electron, and this is the tau is the relaxation time. These are the things you must remember. See once again, very simple things. Very simple, starting onwards. Now, the electric current through a metallic conductor is the electric current through a metallic conductor. The electric current through a metallic conductor. कितना करंट फ्लो हो रहा मेटालिक कंडक्टर के जरिए? I. फाइन. I is equal to N E A V D. Give it as equation number 1. What is N? Number of free electrons per unit volume. What is a charge on electron? What is the area of cross section? What is VD? Drift velocity. This equation we proved. This is the equation we assumed. And already we proved how much is the current flowing through this conductor. I is equal to N E A V D. I is equal to N E A V D. Okay, we know that magnitude of drift velocity is Vd is equal to E tau divided by m. E tau divided by m. What is capital E? Electric field. What is small e? Charge on electron. What is a tau? Relaxation time. What is m? Mass on electron. Give it as equation number 2. Substituting equation 2 in equation 1 we get. Substituting equation 2 in equation 1 we get how much? I is I as it is N E A. VD के जगह में सब्स्टिट्यूट करो. हाउ मच इज VD? E tau divided by m. Therefore I is equal to N E into E square A E, okay, tau divided by m. N E square A E tau divided by m. Okay, rearrange the terms. I, therefore ये ए को यहाँ पे भेजो लेफ्ट साइड. यू सेंड ए लेफ्ट साइड. वी हैव I by A. Then who remains? N E square E. You send that side. Tau divided by m. Who remains? Here E. Fine. Substituting equation 2 in 1. I is equal to NEA, and this is the value of VD. This entire is the value of drift velocity. We have I is equal to N E square A E tau divided by m. I by A is equal to N E square tau divided by m. That is E. Okay, now very simple thing. Since J, current density is equal to I by A. Since current density J is equal to I by A, therefore J is equal to N E square tau divided by m into E. Give it as equation number 3. What we return? We return J is equal to I by A. We return J is equal to I by, what is J? Current density. We discussed in our previous class. You just see current density J is equal to I by A. And here we replaced I by A is equal to J. J is equal to N is for right side as it is. Only left side we changed J as I by A. Give it as equation number 3. Fine. We have
also we have J is equal to sigma E. Yes, this thing also we proved. J equal to sigma E. We obtained expression for current electricity in terms of electric field. ये प्रूव करे थे हम, ये डेरिवेशन हम प्रूव करें. अब जस्ट प्रीवियस वीडियोस देखो. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. This is the expression for current density in terms of electric field. Here the direction of electric field and J are same because both are the vectors. J and E both are the vectors. J vector is equal to sigma E vector. The direction of current density is same as that of current. The direction of current density is same as that of electric current. J is equal to sigma E. ये हम प्रूव करें. यहाँ पे ये प्रेजेंट डेरिवेशन में इक्वेशन 3 है. ये बेसिक नॉलेज है. आल्सो वी हैव, और आप क्या बोलो, वी नो दैट बोलो. प्रीवियस नॉलेज से हमारे को मालूम है करंट डेंसिटी इज इक्वल टू जे सिग्मा ई. कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, व्हाट आर योर कंक्लूजन्स? इक्वेशन 3 प्रेजेंट डेरिवेशन में अराइव करिए. प्रीवियस नॉलेज है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. नाउ यू कंपेयर इक्वेशन 3 and 4, व्हाट आर योर कंक्लूजन्स? इक्वेशन 3 and 4 LHS are same. Can you equate RHS? Comparing equations 3 and 4. Comparing equations 3 and 4, we get. Comparing equations 3 and 4, we get LHS are same. Shall we equate RHS? Comparing equations 3 and 4, equations 3 and 4, LHS are same. Shall we equate RHS? Yes, we can equate RHS. What are RHS? बहुत सिंपल है. Sigma, this is E, is equal to N E square tau divided by M E. Who will get cancelled? This E get cancelled. Therefore, sigma is equal to, yes, what the end? You got N E square tau divided by M. That's what our derivation. See, हम यही प्रूव करना चाह रहे थे ना बिगिनिंग में. हम यही प्रूव करना चाह रहे थे बिगिनिंग में. सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम. सिग्मा electrical conductivity, n number of free electrons per unit volume, E charge on electron, tau reaction time, m is the mass of electron. At the end we got sigma is equal to n E square tau divided by m. Sigma is equal to n E square tau divided by m. यहाँ पे रुकना है आपको. You must stop here only. You must stop here only. आपको होना बोले तो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी लिख सकते हैं. What is extra step? सिग्मा आपको मालूम है रो इज इक्वल टू 1 by sigma. What is rho? Electrical resistivity. What is rho? Electrical resistivity is equal to reciprocal of electrical conductivity. Electrical resistivity is the reciprocal of electrical conductivity. Basic knowledge है. Electrical resistivity. मैं बोलता हूँ यहाँ पे रुके तो बस है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ पे. They are asking only this much. Sigma is equal to n square tau by m. ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट बोल के लिखो. ये बेस्ट थिंग, ये नोट पॉइंट है एक्स्ट्रा. Since rho is equal to 1 by sigma. What is rho? Electrical resistivity. Rho क्या है यहाँ पे? Electrical resistivity है. Sigma क्या है? Electrical conductivity है. Substitute करो यहाँ पे. देखो क्या होते हैं. Substitute करो. 1 divided by what is sigma? N E square tau divided by m. Rearranging the terms. Electrical resistivity is equal to this. M goes to numerator. We have m divided by n E square tau. Okay, m divided by n E square tau. m divided by n square tau. यहाँ पे रुकना है आपको. Sigma is equal to n square tau divided by m is the electrical conductivity. Is the electrical conductivity. Electrical conductivity. Electrical conductivity. Fine. If ये क्या है? ये electrical resistivity है. This is electrical resistivity. This is electrical resistivity. This is measured in ohm meter. This is measured in mho per meter. ये ohm meter में measure करते. Electrical resistivity rho is SI unit is ohm meter. Whereas electrical conductivity SI unit is mho per meter. MHO, mho per meter. The difference you understood. Electrical resistivity and electrical conductivity, they are reciprocals to each other.
Electrical resistivity and electrical conductivity, they are reciprocals to each other. Electrical resistivity is measured in ohm meter, electrical conductivity is measured in mho per meter. But according to 5 marks, according to question, we must stop here only. मैं आपको एक नोट पॉइंट एक्स्ट्रा बोले, आपको ये नोट पॉइंट एक्स्ट्रा बोले 5 मार्क्स के हिसाब से यहां पे रुकना है आपको. सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम, बिकॉज व्हेन यू सी द क्वेश्चन यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा. दे आर आस्किंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अगर रेजिस्टिविटी पूछे तो एक स्टेप ज्यादा जाना, मैं आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूं. इफ दे आस्क इन सम एग्जाम्स, इफ दे आस्क द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मींस यू गो वन स्टेप एक्स्ट्रा, जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना. वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखने के लिए आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर. रो इज अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर. 1 divided by n square tau divided by m, 1 whole divided by n square tau divided by m. This is simplified as m divided by n square tau. बहुत सिंपल है. 1 है डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम है. इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होता है, एम होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ. दिस इज द simplification for electrical resistivity. This is the electrical conductivity is measured in mho per meter, whereas electrical resistivity is measured in ohm meter. Previous class में सब बोले सो है, आप एक को एक वीडियो लिंक्स करके पढ़ना तो आपको मालूम होते हैं. That's why I am giving sequence also. 1 class, 2 class, 3 class, 5 class, 7 class, 8 class, like that. This is measured in ohm meter. ये ohm meter में measure करते. This is measured in ohm meter and this is measured in mho per meter. Mho per meter. This is measured in ohm meter. This is measured in mho per meter. These all are the basic things you must remember. यहाँ पे रुकना है आपको, बस ये नोट पॉइंट नहीं होना. You must stop here only. See, this is a sigma is equal to n square tau divided by m. Sigma is equal to n square tau divided by m. Okay, very important things you must try to understand. एक steps देखो, starting onwards से steps देखते जाओ. All the steps you see, one by one you steps you have to see. See the steps. See the steps. Electrical resistivity is measured in rho value, the SI unit of electrical resistivity. The SI unit of electrical resistivity is measured in ohm meter. The SI unit of electrical resistivity is measured in ohm meter, whereas the SI unit of electrical conductivity is measured in mho per meter. Mho per meter. Mho per meter, whereas electrical resistivity is measured in ohm meter. Okay, very simple things you see starting onwards. बहुत सिंपल है 5 मार्क्स के लिए. ओके, सी ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स. सेम टाइम दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट डेरिवेशन. आर यू फॉलोइंग मी? मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स के लिए इजी डेरिवेशन है और उसके साथ बहुत इजी है. बहुत इजी बोल तो बहुत इजी. मार्क्स ज्यादा है, डेरिवेशन इजी है. डायग्राम 5 मार्क्स कैसे अलॉट होते हैं यहाँ पे बोलो. 5 मार्क्स फॉर डायग्राम, 1 मार्क्स फॉर डायग्राम, 1 मार्क्स फॉर डायग्राम. फाइन, यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया आपको. इसमें डायग्राम फिगर के लिए 1 मार्क्स. नाउ इक्वेशन 1 के लिए 1 मार्क्स. नाउ इक्वेशन 2 के लिए 1 मार्क्स. हो गए. अभी सिंप्लीफाई करो आप, यहाँ तक आओ, यहाँ तक आओ, आपको 1 मार्क्स मिलते. कितने हो गए? 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गए. लास्ट रिजल्ट्स को क्या मिलते हैं आपको? 1 मार्क्स. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. हाउ यू आर गेटिंग 5 मार्क्स. आपको 5 मार्क्स कैसे मिलते? 1 मार्क्स फॉर डायग्राम, 1 marks for equation 1. You have to recall it because previously you know I is equal to NEAVD, expression for current in terms of drift velocity. What is I is equal to NEAVD? Expression for current in terms of drift velocity. Give it as equation number 1, and for that also you are getting 1 marks. 1 marks, 1 marks. 2 marks हो गए. Equation 2 को drift velocity का एक्सप्लेन, मैग्नीट्यूड मॉडुलस माइनस नहीं आता, मैग्नीट्यूड रिकॉल करें हम, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, उसको 1 मार्क्स मिलते. 3 मार्क्स हो गए. बाद में जो है लास्ट में सब सिंप्लीफाई करके जे करंट डेंसिटी का एक फार्मूला है, आप क्या करते, रिकॉल करते. करंट डेंसिटी का एक फार्मूला रिकॉल करते, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे, सब करे, फाइनली आपको क्या मिलता है? इक्वेशन 3. उसको जो है 1 मार्क्स मिल गए. यहाँ पे 1 मार्क्स. टोटल कितने हो गए? 4 मार्क्स हो गए. 1 2 3 4 मार्क्स. लास्ट में सब सिंप्लीफाई करके लास्ट रिजल्ट क्या था? We arrived. What we arrived?
सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम। यहां पे स्टॉप करना, एग्जाम में यहां पे स्टॉप करना। सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, देयर ओनली वी हैव टू स्टॉप इट। अब तब तक करना, वहां तक करते जो है करना। फिगर को 1 मार्क्स मिलते हैं, इक्वेशन 1 को 1 मार्क्स, इक्वेशन 2 को 1 मार्क्स और इक्वेशन 3 को 1 मार्क्स। लास्ट में जो रिजल्ट है उसको क्या मिलते हैं, इक्वेशन को 1 मार्क्स। ये सब ऐड करो, 1 मार्क्स प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो नोट पॉइंट क्या था? To write the note point, basically we should know the relationship between electrical resistivity and electrical conductivity. What is the basic relationship between electrical resistivity and electrical conductivity? Rho is equal to 1 by sigma. What is rho? Electrical resistivity, which is expressed in SI unit of electrical resistivity is measured in ohm meter. The SI unit of electrical conductivity is mho per meter. Electrical resistivity is measured in ohm meter. Electrical conductivity sigma, symbol is sigma, measured in mho per meter. Okay, MHO, mho per meter. क्या है units SI पूरे previous discussion करे. So you are skipping any single video. Now you are directly seeing this video. You can't understand. लिंक है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ऑल आर लिंक्ड। डायरेक्टली व्हेन यू आर सीइंग वीडियो 10 यू कांट अंडरस्टैंड। आप डायरेक्टली प्रीवियस के वीडियोस बिना देखे, डायरेक्टली आप 10 वीडियोस देखे, यू कांट अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई इट्स माय रिक्वेस्ट। एंड लेटर दीज ऑल थिंग्स आर नॉट रिपीटेड। व्हेनेवर रेगुलर क्लासेस स्टार्टेड, दीज ऑल थिंग्स आर नॉट रिपीटेड। टॉपिक्स आर ओवर। रिपीट करो, आपके हाथ में वीडियोस है, रिपीट करो, अंडरस्टैंड करो। डाउट्स रहे तो व्हाट्सअप करो, डाउट्स रहे तो व्हाट्सअप करो, रिपीट करो, पढ़ो। और आपको जो जो डेरिवेशन है 5 मार्क्स के आपको दे रहे हैं, समझ में आए? बहुत सिंपल डेरिवेशन है। देखो, व्हाट इज टुडेज डेरिवेशन? क्विकली आई विल रिवाइज इट। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन टर्म्स ऑफ नंबर, डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिसेंटली आल्सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड। जून 2015 में पूछे, जून 2018 में पूछे, मार्च 2020 में 5 मार्क्स के लिए है। ओके, विद डायग्राम वी हैव टू डिराइव विथ डायग्राम एंड इसे एरो मार्क्स में लिखे तो भी चलता है, इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज एल, व्हाट इज ए, व्हाट इज एन, ई, वीडी। वीडी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। डोंट गेट कंफ्यूज। व्हाट इज वीडी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज वी? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, व्हाट इज कैपिटल ई, व्हाट इज स्मॉल ई? देखो बहुत डिफरेंस है। स्मॉल ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज कैपिटल ई? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द टाउ? रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज एम? मास ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट flowing through this conductor? I is equal to NEAVD. We derived or not? That derived direct result we have to mention. और यहाँ पे भी derive करते जाएंगे आप. It is not necessary because 5 marks है. यहाँ पे derive करें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाते हैं. Okay? Previously we derived same equation. You have to substitute. I is equal to NEAVD. Give it as equation number 1. The magnitude modulus है. Modulus of minus E tau divided by m. Modulus of minus E tau divided by m is E tau divided by m. Magnitude modulus of minus x. Modulus of minus E tau divided by m. E tau divided by m is the magnitude of drift velocity E tau divided by m. Substituting 2 in 1. यहाँ पे ये इक्वेशन टू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या मिलते हैं? आई इज इक्वल टू एन, सब सिंप्लीफाई करो, आपको यहाँ पे इक्वेशन आई मिल जाते हैं। एंड आई बाई ये यहाँ पे लेके जाओ, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई बाई ए। यहाँ पे ये क्यों लेके जाना लेफ्ट साइड? बिकॉज यू वांट टू राइट फॉर करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? जे इज इक्वल टू आई बाई ए। जे इक्वेशन 3 यहाँ पे अराइव करे। प्रीवियस नॉलेज, अब वीडियोस देखो, प्रीवियस वीडियोस में है, देखो प्रीवियस वीडियोस में हम ये डिराइव करें J इज इक्वल टू सिग्मा ए। व्हाट इज J? करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, व्हाट हाउ टू डिफाइन? I by A. Current density is defined as J is equal to I by A. Current density is defined as J is equal to I by A. Okay. What is the formula for J? J is equal to sigma E. We proved it. What is sigma? Electrical conductivity. What is J? Current density. What is E? Electric field. This is we arrived. ये डेरिवेशन में इक्वेशन 3 तक आपको मालूम होता है, ये प्रीवियस नॉलेज है. इक्वेशन 4 is from our previous knowledge. We derived that one. Direct result we are substituting here. Where we derive, what is the derivation name? Expression for current density in terms of electric field and electrical conductivity. ये prove करे. J is equal to sigma E. We proved it. J is equal to sigma E. Substituting this is 3, this is 4. LHS are same. Can we compare RHS? LHS are same. Equation 3 और equation 4 के LHS सेम है. Can we compare RHS? Yes, compare it. Sigma E is equal to n square tau divided by m. E get cancelled. E get cancelled. Who remains? n square tau divided by m. Therefore, electrical conductivity is equal to n square tau divided by m.
Therefore, sigma is equal to n square tau by m is the expression for electrical conductivity in terms of relaxation time and free density. What is n? Number of free electrons per unit volume of the conductor. What is n? Electron density bolo, number density bolo, free electrons per unit volume. Overall, we can give three meanings for n. What is n? Electron density or free density, or what is another name? Number of free electrons per unit volume of the conductor. What is n? Number of free electrons per unit volume of the conductor, or electron density, or number density. All the names are same. The symbol is n. What is tau? Relaxation time. Sigma is equal to n square tau by m. Sigma is equal to n square tau by m. What is sigma? What is sigma? Electrical conductivity. What is rho? Electrical resistivity. They are reciprocals to each other. जब रो ओम मीटर में मेजर करे तो उसका उल्टा क्या होता बोलो? मो पर मीटर. 1 डिवाइड बाय ओम मीटर है, 1 डिवाइड बाय ओम मीटर है, उसका उल्टा क्या होता? मो पर मीटर. When rho, what is rho? Electrical resistivity, reciprocal 1 by rho. Substitute करो rho का वैल्यू n स्क्वायर tau by m. इसका उल्टा क्या होता है? m डिवाइड बाय n स्क्वायर tau. 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर tau by m, उसका उल्टा क्या होता? m डिवाइड बाय n स्क्वायर tau. इतना एक्सप्रेशन. This is the expression. 1 rho 1 divided by rho. Therefore, rho, what is rho? Electrical resistivity is equal to m divided by n square tau. M divided by n square tau. Yes, this is measured in ohm meter. This is measured in mho per meter. Okay, fine. तो आपको एग्जाम में यहाँ तक ही रुकना है. ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिया मैं. कभी कभी एक्स्ट्रा बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं. वी डिराइव्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बट इन सम एग्जाम दे सेड वन स्टेप मोर. दे आर सेइंग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. देन यू हैव टू राइट वन स्टेप मोर. Rho is equal to 1 by sigma. Sigma means electrical conductivity. Rho means electrical resistivity. Sigma, this is sigma. This is sigma, electrical conductivity. This is rho, electrical resistivity. Fine. See all the things. See all the things carefully. Okay, fine. Steps, all the steps you see carefully. Stop it. Okay, thank you.